Hello students, Zoology MSc semester 4. Now we are starting the second topic of your syllabus, that is tryptophan apron. Operon, tryptophan operon. ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है। इसके बायोसिंथेसिस में जो एंजाइम लगते हैं, उस एंजाइम के सिंथेसिस के लिए यह जीन क्लस्टर है। ओके, इसको शॉर्ट में टीआरपी ओपेरॉन भी कहते हैं। इस ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इस ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का रेगुलेशन हम लोग लास्ट में देखेंगे। रेगुलेशन, हाउ इट इज रेगुलेटेड। रेगुलेशन में रिप्रेशर, प्रोटीन का रोल और एटीन्यूएशन का मैकेनिज्म हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन क्या है, इसका स्ट्रक्चर, ये हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, this operon is found in E. coli bacteria, and it is a group of genes that encode biosynthetic enzymes for the amino acid tryptophan. Okay, so you should first, I will draw a simple diagram and then a detailed diagram, more detailed diagram. See, at the DNA level, this operon has 5 genes, encode for 5 genes which make 5 enzymes for tryptophan biosynthesis. के अलावा ये स्ट्रक्चरल जीन हो गए। This operon is having 5 genes which encode enzymes needed for tryptophan biosynthesis. Okay, और साथ ही साथ एक प्रमोटर रीजन है where RNA polymerase binds.
and an operator region also, where the pressure protein binds. Tryptophan capital E, TRP capital E, TRP capital D, ये सब जीन के नाम हो गए. TRP capital C, TRP capital B and TRP capital A. This is DNA. Then comes a region which I will show you in detail later, and this region is responsible for attenuation. This region, okay? So I'll come to that later. Region is called promoter, where RNA polymerase binds. और इस promoter region के अंदर में this region is called operator, where repressor protein binds. And this is taken from E. coli bacterial genome. Okay. First, you understand this. What is it? Tryptophan operon is found in E. coli bacteria, and it is a group of genes that encode biosynthetic enzymes for amino acid tryptophan. Okay. The tryptophan operon is expressed, or you can say it is turned on. Expressed means turn on हो गया. When tryptophan levels are low and this tryptophan operon is repressed or turned off when there are high level. लॉजिक सिंपल है. जब ट्रिप्टोफैन, ये देखिए थोड़ा सा उल्टा है पिछले पिछले वाले ओपरॉन से, जो इंडिसिबल ओपरॉन था, लैक ओपरॉन, उसमें क्या था, जब लैक्टोज अवेलेबल है तो उस समय ओपरॉन स्विच ऑन हो रहा था, और जब लैक्टोज अवेलेबल नहीं है तो ओपरॉन स्विच ऑफ हो रहा था, क्योंकि लैक्टोज को फर्दर कैटाबोलाइज करना था, इसीलिए उसको लैक्टोज, क्योंकि उसको और तोड़ना है लैक्टोज को, तो जीन प्रोडक्ट्स उसके लिए एंजाइम्स अवेलेबल रहेंगे तभी लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा. इसलिए लैक्टोज जब अवेलेबल था तब ओपरॉन, लैक ओपरॉन स्विच ऑन हो रहा था. यहाँ पर देखिए ट्रिप्टोफैन जब अवेलेबल है
तो ओपेरॉन स्विच ऑफ हो रहा है। ओके, ये अपोजिट है। क्यों? क्योंकि ट्रिप्टोफैन का कोई फर्दर फिर कैटाबोलिज्म नहीं होना है। ट्रिप्टोफैन विल जस्ट इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोटीन। ओके, ट्रांसलेशन चल रहा होगा, उसमें ट्रिप्टोफैन इंक्लूड होगा, इनकॉर्पोरेट होगा, वो फिर फर्दर ब्रेकडाउन उसका नहीं होना है। इसलिए ट्रिप्टोफैन जब अवेलेबल है तो ट्रिप्टोफैन बनाने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिप्टोफैन, इसीलिए ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के जीन स्विच ऑफ रहेंगे। लेकिन जब ट्रिप्टोफैन अवेलेबल नहीं है तब ट्रिप्टोफैन को सिंथेसाइज करने की आवश्यकता है। इसलिए उस कंडीशन में ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के जीन्स स्विच ऑन हो जाएंगे। ओके, तो देखिए क्या हो रहा है। व्हेन टीआरपी कब टर्न ऑन हो रहा है, दिस ओपेरॉन इज turned on when tryptophan levels are, TRP levels are low, and this is turned off when TRP levels are high। यानी इसको बंद कर दिया जा रहा है जब टीआरपी लेवल हाई है, यानी बनाने की उस समय आवश्यकता नहीं है। टर्न ऑन तब हो रहा है जब टीआरपी लेवल कम है। कैसे हो रहा है, इसी का मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। ये इसीलिए ये हो गया आपका रिप्रेसेबल सिस्टम, और लैकोप्रोन था इंड्यूसिबल सिस्टम। उसमें टर्न ऑन हो रहा था व्हेन द मेटाबोलाइट लेवल वाज हाई। लैक्टोज का लेवल हाई है तो वहां पर टर्न ऑन हो रहा था। ओके, तो वहां इंड्यूस हो रहा था, और यहाँ पर रिप्रेस हो रहा है मेटाबोलाइट के प्रेजेंस में। इसीलिए ये रिप्रेसेबल सिस्टम। तो यह it is one of the mechanism by which this tryptophan operon is getting regulated, that is the repressor system. सेकेंड मैकेनिज्म है एटेन्युएशन सिस्टम। ये एटेन्युएशन सिस्टम पर हम आएंगे अभी। पहले आप इस ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को अच्छे से समझ लीजिए। इस पिक्चर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप समझ चुके होंगे अभी तक क्या होगा। जब ट्रिप्टोफैन की आवश्यकता पड़ेगी, हम सब कंडीशन में एक एक करके समझाएंगे आपको। पहले आप जान लीजिए कि टीआरपी रिप्रेसर होता है प्रोटीन, टीआरपी repressor protein. In this case, this is regulated by turned on, turned off. When TRP levels are high, the TRP repressor protein is there. When this TRP repressor protein can bind with tryptophan, and it can also bind to the DNA, other side. When it is bound to TRP, tryptophan, that time its shape is different. When it is not bound to TRP, the shape of TRP repressor protein is different. So binding is resulting into the conformation change. So in the situation when TRP level is high, then a plenty of TRP is available for TRP repressor protein. So in that case, when the TRP levels are high, TRP repressor protein is present in the form, is bound to the tryptophan. When this protein is bound to tryptophan, then it can bind to DNA. So it binds to operator region.
this region. Only when tryptophan is bound to repressor protein. When tryptophan is not bound to TRP repressor protein, then TRP repressor protein cannot bind to the operator region. Okay. इसीलिए when TRP levels are high, then repressor protein is bound to the operator region. And by this way, it is preventing RNA polymerase to go ahead, go upstream for transcription. RNA polymerase will come and sit here in the promoter region, but when TRP repressor protein is bound to the operator region, it is blocking this RNA polymerase to further transcribe these genes. Okay, so this is the mechanism by which tryptophan operon is getting regulated, one of the mechanism, and this is the repressor mechanism. Okay students, आ रहा है समझ में? Another mechanism is attenuation, and in that mechanism tryptophan biosynthesis is regulated, and in that mechanism there is a coupling of transcription and translation. I'll come to that later. As you understand this, what is it? So bacteria such as E. coli or any friendly bacteria which are inhabitant of your gut, even E. coli is also a friendly inhabitant of your gut. They need amino acids to survive because they will make proteins. So why this tryptophan operon is important? Because of this, because they need amino acids to survive, because they will make their own proteins. So one of those, one of the amino acids that they need is tryptophan. So if tryptophan is available in the environment, E. coli will take it up and use it to build their proteins. लेकिन E. coli के पास अंदरूनी क्षमता भी है कि अगर बाहर के एनवायरनमेंट में उसको फूड में यानी स्कार्सिटी हो गया या वहां पर ट्रिप्टोफान उसको नहीं मिला, तो भी वह अपने एंजाइम की मदद से, वो एंजाइम जो एनकोड होते हैं इन 5 जीन्स के द्वारा, उन एंजाइम्स की मदद से ट्रिप्टोफान बनाया जा सकता है अगर वह उपलब्ध ना हो तो। ठीक है, and these 5 genes are located next to each other. Okay, and we study them in this group in which there is one promoter and one operator region. So this whole gene cluster is getting regulated by this single promoter. So this is one operon, and the name is TRP operon or tryptophan operon. Okay, अगर ट्रिप्टोफैन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है
then E. coli bacteria will not be needing tryptophan. Okay, so they will not switch on these genes. So the transcription of these genes in the TRP operon will be switched off. But when tryptophan availability is low, operon is switched on, then genes are transcribed. Biosynthetic enzymes from each of these genes are made, and then tryptophan will be synthesized. Okay. This operon is consisting of 5 genes that encode enzymes needed for tryptophan biosynthesis, along with a promoter, that is RNA polymerase binding site, and an operator binding site, that is the binding site for repressor protein. Okay. And the genes of TRP operon, these genes are transcribed as a single messenger RNA. Okay. How this operon is getting turned on and off. So I have already explained you. This is one mechanism via repressor protein. So we will study first via repressor protein how it is happening. Then we will see by attenuation. The first one is, so this is the first mechanism of the regulation. How TRP operon is getting on and off. Here the role of operator comes. This is the stretch of DNA, this operator, which is recognized by a regulatory protein called TRP repressor. When the repressor binds to the DNA of the operator, it keeps the operon from being transcribed by physically getting in the way of RNA polymerase, the transcription enzyme. Okay? अगर ये यहाँ पर DNA पर बाइंड किया हुआ है TRP रिप्रेसर, तो ये फिजिकली भौतिक रूप से ये RNA पॉलीमरेज को आगे बढ़ने नहीं देगा अपस्ट्रीम टू ट्रांसक्राइब the genes of the operon, ब्लॉक कर देगा अगर टीआरपी रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पर बाइंड है। लेकिन टीआरपी रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पर बाइंड तभी करेगा जब यह प्रोटीन टीआरपी से बाइंड, यह प्रोटीन खुद ट्रिप्टोफान से अगर बाइंड है तभी यह प्रोटीन डीएनए से बाइंड करेगा ऑपरेटर रीजन में। तो इसी मैकेनिज्म के द्वारा इंश्योर किया जा रहा है। और टीआरपी रिप्रेसर प्रोटीन जब टीआरपी से बाइंड किया हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि बाहर के मीडियम में यानी आउटसाइड मीडियम में ट्रिप्टोफान इज अवेलेबल। ओके, अगर यह बाइंड नहीं किया हुआ है दैट मीन्स ट्रिप्टोफान इज नॉट अवेलेबल। तो इस तरह से टीआरपी रिप्रेसर प्रोटीन एक तरह से सेंसर का काम कर रहा है। यहाँ पर टीआरपी के लेवल को सेंस कर रहा है। अगर टीआरपी का लेवल हाई है तो टीआरपी रिप्रेसर प्रोटीन से यह बाइंड कर जाएगा टीआरपी, और टीआरपी जब बाइंड करेगा रिप्रेसर प्रोटीन से तो यह रिप्रेसर प्रोटीन डीएनए से बाइंड कर जाएगा
जो कि ऑपरेटर रीजन का डीएनए है, और वहां पर बाइंड कर जाएगा तो रास्ता अवरुद्ध कर देगा आरएनए पॉलीमरेज का, तो आगे वाले जीन, अपस्ट्रीम वाले जीन ट्रांसक्राइब नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? और अगर ट्रिप्टोफैन का लेवल कम है तो यह टीआरपी रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करेगा। दैट मीन्स टीआरपी इज रिक्वायर्ड बाय द सेल, टीआरपी इज रिक्वायर्ड बाय द सेल ऑल द टाइम, ठीक है, लेकिन अवेलेबल नहीं है, तो इंडोजीनियसली टीआरपी को, ट्रिप्टोफैन को बायोसिंथेसाइज करने की आवश्यकता है, तो वह ओपेरॉन जो है स्विच ऑन हो जाएंगे। क्योंकि टीआरपी नहीं है, तो टीआरपी नहीं है तो टीआरपी रिप्रेसर प्रोटीन के साथ भी बाइंड नहीं करेगा, तो टीआरपी रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं किया तो टीआरपी रिप्रेसर प्रोटीन इस ऑपरेटर रीजन में बाइंड नहीं करेगा तो रास्ता क्लियर रहेगा आरएनए पॉलीमरेज के लिए। आरएनए पॉलीमरेज विल ट्रांसक्राइब द जीन्स। ओके स्टूडेंट्स, फिर से बोल देते हैं, व्हेन द रिप्रेसर, दिस रिप्रेसर binds to the DNA of the operator, it keeps the operon from being transcribed by physically getting in the way of RNA polymerase. Okay, टीआरपी रिप्रेसर प्रोटीन का जीन कहां पर, वो इस ओपेरॉन का हिस्सा नहीं है, इस टीआरपी रिप्रेसर प्रोटीन का जीन, इसका जीन कहीं दूर में है, सपोज यहां पर है, दूर में है, इसके पास में नहीं है। और इसके जीन के पास अपना प्रमोटर है, ठीक है, तो ये इस ओपेरॉन का हिस्सा नहीं है। ओनली द जीन प्रोडक्ट इज टेकिंग पार्ट इन दिस, in the regulation of this operon. Okay, तो टीआरपी रिप्रेसर प्रोटीन का रोल है, क्योंकि टीआरपी रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा खुद से ही डीएनए से हमें बाइंड नहीं कर सकता है, जबकि इसको आवश्यकता है ट्रिप्टोफैन की। It binds and blocks the transcription only when tryptophan is present. So when tryptophan is around, it can attach to the repressor molecules and changes their shape so they become active. TRP, upon binding with tryptophan, tryptophan repressor becomes active. Its shape changes and it becomes active, and then it can bind to the DNA. Okay. तो इस तरह से एक आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक छोटा मॉलिक्यूल, दैट इज एन अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन, is switching the repressor into the active state. This is the repressor. It is making the, by binding with it, it is making this repressor an active molecule. Therefore, if this is a repressor, this is TRP here is also called as co-repressor. Okay. So we will see both these scenarios when high tryptophan is there and when low tryptophan is there. Okay. How this operon
is getting switched on and switched off. So first case is when there is high TRP, high tryptophan. What will happen in this case? RNA polymerase will, when there is high TRP, as I have already told you, it will bind to the TRP will bind to the repressor protein. When TRP is bound to the repressor protein, then the repressor protein becomes active and it can bind to the operator region DNA. So in this case, repressor protein will be bound to the operator region DNA. Okay, and TRP is bound to it. There is plenty of TRP, tryptophan in the medium. So this is extra, means high TRP. Tryptophan is there. So TRP is bound to the repressor protein. TRP repressor. Active tryptophan repressor. It is not letting RNA polymerase to move upstream. And transcribe further, transcribe upstream. Okay. So in this situation, when tryptophan level is high, active TRP repressor protein is blocking the RNA polymerase to transcribe the genes of this TRP operon. So in this case, it is turned off. This operon is turned off. Okay, students, आ रहा समझ में? What will happen when there is low TRP? When there is a little tryptophan in the cell, the TRP repressor
will be in inactive state because no tryptophan will be available to bind to and activate it. And in that case, it will not attach to the DNA or block the transcription. And this will allow the tryptophan operon to be transcribed by RNA polymerase. Okay. So see what will happen. इसको छोटा कर लेते हैं. ऑपरेटर ब्लॉक्ड नहीं है क्योंकि लो टीआरपी है. तो आरएनए पॉलीमरेज will come and bind to this promoter region and it will start the transcription. ये हो गया turned on. Okay, students, this is very simple. So, in this mechanism, now you have seen the role of repressor protein in turning on and off this tryptophan operon. In both the cases, when tryptophan level is high and when tryptophan level is low. Okay, students? So TRP repressor, here you can see that it is acting as both. This TRP repressor protein is acting as sensor and a switch. Sensor plus switch. ठीक है. रिप्रेसर जो है स्विच ऑफ करता है, कर रहा है अगर बाइंड है यहाँ पर. तो अगर रिप्रेसर प्रेजेंट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये स्विच ऑन रहेगा. ठीक है. So it is sensing whether tryptophan is already present at high levels or not, and if it is so, means when tryptophan level is high, it switches the operon to the off position. And by this, it is preventing unnecessary biosynthetic enzymes from being made. Okay. So in the next class, we will see the attenuation mechanism of the regulation of tryptophan operon. Okay, students.